स्टार्टिंग से शेयर करना ये ऐसा क्या होता है कि नीम का ऑयल जो जमीन से ऑनलाइन जानकारी देखिए स्क्रीन पे शेयर। हाँ उसमें अगर ये चीज होता है तो उसका जो आ रहा है ना फोकस और आपने बाय चांस सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। देन आपको कंसीडरेशंस कर लेना बीच में जो नहीं देखो बना वही बात कर रहे हैं अभी भाई अभी मैं यहाँ पर मुझे लेक्चर देने गया तो मैंने तो 4 क्वेरी की बेचारे सब कहते सर हम तो गाँव वाले हैं इट इज नॉट द वे आप यहाँ कंज्यूम करने के लिए बैठ रहे हो और आप इसकी जो सर्विस कर रहे हो तो सुनना हमारे तो फिजिकल है ही यहाँ वाली तो फिजिकल है ना ये दिख जाएगा ये है ना दिख रहा है नहीं हो एक्स्ट्रा जो सोशल पॉलिसी की लड़ाई होती है बजट में सोशल पॉलिसी ये दिखेगा सोशल फॉरेस्ट पे जनरल टर्म हो गई outside the forest area. Forest area is legally defined. Any plantation outside is called social forest. Correct. नीम ऑयल अच्छा है नीम ऑयल में चुटकी और दो सी चीज दिख रहे हो दोनों हां दिख तो लिया होगा नीम तो नाम बात है कोई भी रोग हो दुनिया का नीम का वो हां नहीं हम लोग थोड़ा सा मैं भी यूज करता हूं जैसे चावल में खाना कभी नहीं मैं सर में लगाने के लिए लेकिन आज हमें खाना है अभी नहीं पड़ता जब न्यू निकली है आज भी और वो वो मेरा पका वाला जो है अभी हटा तो आपके पानी है हम तो अभी खाते हैं से खाते हैं नीम और बेल आगे प्रवीण कुमार जी तो गांव में गया तो मैं तो सोच रहा हूं कि गांव जाके इसका अवेयरनेस कराऊं नीम एंड मेडिसिनल हर्ब्स ये ऑडियो जा रही है राजीव एक बार चेक करना सब ऑडियो जा रही है अच्छे सब चले गए बोल के देखिए आप तो वहां से कर आवाज आ रही है क्या आपको प्रवीण कुमार जी? हाँ बिल्कुल आ रही है। अरे वाह वेरी गुड चलिए excellent welcome to the meeting we have as of now 3-4 members here so although I was waiting for you कि आप भी आएंगे हाँ नहीं but then जैसे ये आया then I thought that I'll go online today. चलिए कोई बात नहीं और लोगों ने राजीव शर्मा राजीव जी हैं क्या? राजीव से बात हुई थी राजीव प्रधान से वो तो आने वाले थे ऑनलाइन। हाँ ये also रोड के ऑनलाइन आएंगे तो He's at home. He's at home. I think सो रहे होंगे तो जगाना पड़ेगा एक बार। खाली एक ही रहेगा राजीव प्रधान unless you can write virtual the bank and काम करना यहाँ तो नहीं दिख रहा ओके नानी तो भी आ रहा है नानी आवाज आ रही है आपको? Hi sir, we can hear you. अरे but we want to see you also ना नहीं फिजिकल आपको कुछ चेहरा बदला हुआ नजर आएगा क्यों सर बदला क्यों नजर आएगा? अरे फरवरी में मतलब एक महीने के बाद ये देखिए प्रवीण सर देखिए कैप लगाए बैठे हुए हैं बिल्कुल ठंडा क्या ना प्रवीण कुमार ये खड़े थे ना अरे प्रवीण कुमार जी को देखा क्या
आप ज्वाइन कर सकते हैं, तुमको दिखेगा मोबाइल से करेंगे फोटो भी दिखेगा। नहीं ठीक है, मतलब मेरे इसको तो आगे सामने आ रहे लीजिए सर, एज डिजायर्ड हाजिर हैं। चलिए सर, वेलकम वेलकम। तो हम लोग एक बार इसको इनफैक्ट ये अगर व्यू उधर का करेंगे तो इसको देन वी कैन गेट एवरीबॉडीज पिक्चर ना, ऐसे इसको घुमा देंगे ना, बिकॉज हमारे मनोजा जी हैं और खंगार साहब हैं एंड वी हैव राजीव कुमार जी, सो I don't know, you can keep it like this so that that's be better. Good physical presence also. So we have to complete the quorum, I think. So No, that's good. I'll miss the tea. हाँ, मतलब चाय के साथ कुछ और भी खिलाते हैं आपको, अच्छा लगा। क्या बात है। Virtually that you will have to manage. भाभी जी को बोलना पड़ेगा कि भाई you can have better options there, घर में पकौड़ी वगैरह बन जाएगी। ये तो घरवाली की इच्छा पे निर्भर करता है सर। So I think we are already 4:15 now, already 15 minutes starting late. Shivani, can we? Yeah, already 4:15 now. Yeah. Now I think speakers are also on, so we can hear you loud and clear. And so I think on behalf of entire team Abok India, we welcome you all to today's meeting, which is I think happening after almost a physical meeting last we had at Hotel Starwin, October. I think most of you were there. And before we begin today's meeting, I would also like to welcome Shri Rajiv Kumar ji. So we can have a round of applause for him. I think for being part of Abok India family, and we will seek his guidance on a lot of issues. I think on environment and other such issues which is important for us. And the agenda for today's meeting has been while shared. What we will be doing is that we will be covering a brief about what has happened over the last few months from October onwards, and what are the plans and what has been the new developments in the last 6 months or so, because hopefully we will be over with the COVID situation now, and we can actually increase our ground level activities. I remember last meeting was broadly in terms of apprising all the members about our initiative on Alak. So Alak, as we all know, is Abok Learning and Knowledge Home, and I think most of you आप लोग आ भी चुके हैं, बच्चों से मिल चुके हैं. So what in the last meeting there were a lot of suggestions, a lot of ideas which actually we had discussed. आप लोगों के बहुत सारे सुझाव भी आए थे. So now in today's meeting we will be covering some of the activities done after that, and then we will take it forward कि अभी हमें आगे जो maybe in this quarter and next quarter, of course we will have a next meeting in April, but what can be done in these 3 months, and what we can plan, that is what we will discuss. So I can request Garima if you can cover the activities done in the last 3 months. So Garima, just to introduce, I think most of you know, Garima had some training at HR Abok India Group. So Garima will be just taking us through the presentation on what we have done activities so far. Yes, what we have done. Good afternoon, everyone.
last meeting we had on 30th of October in Southern Hotel. So we had few things that we had discussed. So there were few action points that were discussed that day. For example, हमने अलग homes के लिए बात की थी कि we are proposing अलग home in different districts of Uttar Pradesh and abroad, in different states as well. Or very recently, we have got the consent from Mr. From Bareilly. Can we go to the slide? So you can you see the slides, sir? I can see, but then only the first one. I think you are on the third slide now. No, sir, this is the first one only. This is the agenda, basically. Today's agenda, sir, ये वो है. Welcome address and all. So this is the first slide of the presentation. This is the first slide of the presentation. Action points जो हमने सर last meeting में discuss किया था, उसको मैं जो भी discussions हुए थे, I would like to उसमें हमने क्या action लिया है, what are things that are in pipeline, वो मैं भी discuss कर रही हूँ सर. जैसे कि अलग home में हमने different cities में propose किया था कि we can start अलग home at different locations. So we have got the consent from from Bareilly. सर इसमें सर ने अप्रूवल दिया है, वो अलग होम स्टार्ट करना चाहते हैं बरेली में. We have got the things are in pipeline और हम चीजें डिस्कस करके इसको बरेली में स्टार्ट कर देंगे. So as we all are aware, हम जो स्टूडेंट्स जो अलग होम के बच्चे हैं उनको सब वो अंडर प्रिविलेज्ड है, तो उनको they don't know how to read and write. So basic knowledge हमने उनको दे दिया because अलग officially started on 8th of September, sorry. So we have given basic writing knowledge, जैसे हिंदी में लिखना और इंग्लिश में words, ये सारी चीजें उनको भी बताइए. But we are in the process कि हम उनको और उनका नाम लिखना सिखाएं, उनको basic जो lines जैसे वो basic उनको अपना introduction देना सिखाएं, वो कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, उनको वो सारी चीजें वो बता सकें. And also we had the suggestion of getting the funds from the banks. Now because yesterday only we got the approval of 8TG. So जिसके अंदर now we are eligible for the fundings from the bank now. So that we have got today. Big congratulations to Abu Kenya for this. And also we discussed last time on the pre-retirement and retirement training programs. So we are in discussion with several banks, जिसमें कि हमने propose किया है paid trainings on retirement trainings and pre-retirement training programs. So just to update, हम लोग इसमें जो different verticals हैं, अभी हम लोगों का Evoke India group में we have now 2 verticals. One is Artha Vipra Finvest Private Limited. So Artha Vipra Finvest Private Limited is the company which is into financial services, products and distribution, which is a for-profit company and which has got its. So it is a limited company now. Yeah. It was primarily it was sole proprietorship. Now it is a Finvest Private Limited company. And also in IFLC 2021 हमने 3 locations identify की थी for the chapter chairman. हमारे कुछ trainers हैं, कुछ members हैं जिनको हमने identify किया है for 3 locations primarily as of now. आगरा, मुंबई and देहरादून. आगरा में Mr. Mr. Agarwal. Mr. Agarwal, he'll be the chapter chairman from Agra. Mumbai में Ms. Tripti Kapadia, and from Dehradun we have Mr. Kanpal, who will be heading the chapter chairman. Who will be the chapter chairman and will indulge in the business of increasing the members and also the programs that we are into for the schools and colleges.
And also we have during the IFLC we have signed the MOU with SOM and also different academic different colleges like National PG College. We have signed MOU on skill development and financial training on financial programs. Also, as I've already told, 8th September was the launch of Alak Homeschool. That this is the very first school for Alak, and we educate underprivileged children of nearby locality to make them read and write the basic English and Hindi in basic English Hindi aspects. Also, we are registered now as under ATG, and today only we have this we have formed one women SSG group named Onati, and this is for the women on the Thank you, Garima. Just to cover, I think we also welcome Madam Pratima Tiwari ji for we are waiting after a long time. I think after last meeting में भी नहीं आ पाई थी. Very long time. So in terms of our I was saying that Evoke India Group has now very clearly defined roles in terms of two organizations which will be parallelly doing work. So one is Arthavipra Finvest Private Limited. So Arthavipra Group is the company which is going to be working primarily for the distribution of financial products. So far we were only doing financial products in the area of investments and portfolios and other things. And now we are also moving towards setting up a loan vertical also. So that also is another plan, how we can get various loans under our Arthavipra company, for which Mr. Sarvesh Srivastava will be very soon be joining and taking that forward. We already have in that team Mr. Vaibhav Avasthi is there, Saurabh Gupta, and so a lot of you know about them. I don't know whether you have put pictures on here. You have put that. Okay. So Arthavipra is one company, Arthavipra Invest, and second is Evoke India Group. Now Evoke India Consultants Private Limited, which is a for-profit company. Just to tell everyone, if somebody asks what is Evoke India, because our boards everywhere say it is only Evoke India. Nothing is written anywhere. हमारे पास एक साहब आए थे बहुत पहले कि भाई ये Evoke India है क्या, आप बताइए. तो हमने जब अपना नया बोर्ड बनवाया तो उसमें of course we wrote that thing, training, consulting and social enterprise. So training is the major area which we will be focusing on. We have been doing trainings every month, 40 to 50 trainings, which are on financial sector only. And these are all trainings which we do under a project with National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange and SEBI. Because Evoke India Foundation, which is now also ATG registered NGO. This is also a only recognized investor association by SEBI in the state of Uttar Pradesh. So having that as our main recognition by a government body, that allows us to do a lot of financial literacy programs जो हम लोग कर रहे थे. Sorry to interrupt, sir, but can everyone see the slides, because I can see only the first slide was visible on screen. So sir, can anybody please confirm if you can see the slides, because we are on the first slide now. See, Garima, we have just started now. You have just now turned on the slides. Earlier to this, we were only on the first page. I have even messaged you. That is what I can see now. Now can you see the slides, ma'am? Yes. Now it is visible. I mean, action points from IFLC. This slide is showing. Yeah. It is. Okay. So, Alak is again, I was
on the point of Evoke India and training as one area. Second area, if somebody asks any of my team member what Evoke India does, so there should be very clear consistency, and same thing we have to tell all of you also, that it is a training, consulting and a social enterprise. So under the social enterprise, we have done a project with NABARD earlier, about 2 years back, 2019, which was for about 60 women. A skill development program was done. And these women are still attached with us. With those women, we are doing some work, and now they have recently got a SHG self-help group formalized, because बना तो लिए थे हम लोगों ने करीब 2 साल पहले ही, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन, अकाउंट ओपनिंग वाला डिले हो गया था. तो आज हम लोगों ने उनका अकाउंट ओपनिंग भी करा दिया है, and they have formally structured as a self-help group, so they can get a lot of government benefits also, and which we can again take it further. तो सोशल एंटरप्राइज में हमारे पास अभी ये 2 प्रोग्राम है. एक तो अलग है, अवोक लर्निंग एंड नॉलेज होम, जो बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ पर एवरी डे फ्रॉम 3 to 5 PM, और दूसरा ये वुमेन ग्रुप्स हैं. So I'm not so again दूसरा अपडेट है IFLC जो हमारी कॉन्क्लेव हुई थी, आप में से काफी लोग थे उसमें, which happened in first time in Hilton hotel में हुई हमारी. All the 3 other 2018 से we have been doing in educational institution, but this time it was done in Hilton Garden Inn, which was very well attended by almost 100 people. I don't know if anyone has seen the pictures. Sajal? So have you put the picture of IFLC also? So we had inaugural session and 5 sessions, जिसका कि हम लोग, so these are some of the pictures of the last 6 months programs which we had done. Yeah, I can't get any sound. I'm sitting here with the. Ma'am, can you please confirm? Laptop open. Sound नहीं आ रही है. Can you see the slides or the pictures? Hello. We can just see the action points from IFLC 2021. This is what is visible on the screen, sir. एक मिनट से होल्ड कीजिए. हाँ तो वही वो तो कुछ नहीं. Am I right, Praveen ji? Yeah, absolutely. Now I can see the pictures. Now we can see the pics. Now we can see the pics. Okay. So again, this is our Kanpur team also. Arthvipra, you can see नीचे से पहला पिक्चर, उसके बाद वुमेन SHG ग्रुप जो है, उन्नति, उसका पिक्चर है. अलग के बच्चों का पिक्चर है. हम लोगों ने पीछे बड़ा प्रोजेक्ट एक जो टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ किया, which was with their फेमिना, 10 जिलों में हमने एक वित्तीय साक्षरता के प्रोग्राम किए उनके, and that was really very नवंबर में हमने किए थे, 24 नवंबर से 13 दिसंबर तक. और लास्ट. हेलो. यस. नहीं आ रही है आवाज. पता नहीं क्या हो रहा है. Left up upper side corner, is it on? कीर्ति मैम, आपको क्या, हम सबको तो आवाज आ रही है, क्या आपको आ रही है? नॉट ऑन म्यूट सर आवाज. नहीं वहां पे किसी और को नहीं आ रही. किसको नहीं आ रही? किसकी आवाज? कीर्ति मैम. उनका कुछ होता है कनेक्टिविटी. There seems to be some connectivity issue in her case. क्या चेक करें? नेटवर्क लेफ्ट का टॉप पे एक बटन है, क्योंकि सब खुला तो हुआ है मेरा. लाउड स्पीकर का. मैम को गाइड कर दे. हाँ, दिख तो रहा है मुझे सब. अभी आ रही है क्या आवाज? नहीं, इन्हीं आप ही लोगों की आ रही है जो. आप सुन पा रही हैं? अभी मैं प्रवीण कुमार बोल रहा हूँ, ऑनलाइन हूँ मैं. नहीं तो फिर से क्या करें, इसको ऑफ करके ऑन. मैम आप रिकनेक्ट करिए. मैम लीव करके एक बार फिर से ज्वाइन कर लिंक के थ्रू. लैपटॉप पे किया है ना कि मोबाइल पे किया है?
नहीं मोबाइल पे दिक्कत होगी, मोबाइल में ना आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है कि मोबाइल से ज्वाइन किया है? कीर्ति मैम, कीर्ति मैम। मैं तो मोबाइल पर हूँ एंड एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नहीं मोबाइल में वो कीर्ति मैम, आपको वाईफाई और वो प्रोडक्ट करना पड़ता है ना, साउंड के लिए आपको वो करना पड़ता है, ऑडियो सेलेक्ट करना पड़ता है। कीर्ति मैम, आप एक बार लीव करके फिर से आप ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। Garima, she is not able to hear us. हाँ, उनको फोन बता दो, फोन बता दो। Phone, please call her and tell her. हेलो। हाँ शिवानी, घर में अच्छा। हाँ हाँ अच्छा ठीक है, ओके ओके। मैं फिर से इसको ऑफ करके ज्वाइन करती हूँ। हाँ So everybody will learn technology very fast. I think that is good exercise of mind, you know. वही मैं कह रहा था कि मतलब उनका 2 घंटा 3 घंटा चलता है। Okay. So वापस हो जा बैक कर लो, बहुत जरूरी हो गया है, सब टेक्निकली जो है अपडेट करना है। दोबारा शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो पीपीटी। Praveen ji, now the screen is not visible. Yes, We are just sharing the screen again. पीपीटी दोबारा से कर रहे हैं। I think we can go ahead with the screen meantime. शेयर कर दिया? शेयर कर दो, शेयर दो बहुत सारा। बहुत ज्यादा लग रहा है। अरे आइए सर, नमस्कार नमस्कार। Yes, screen is there. Now the specific slide needs to be opened. Can you see photo slide glimpses of the program that was done in 2021? Can you see the photos slides here? Sir, can you hear me, sir? Sir, audibility है अभी sir? आप सुन सकते हैं? Yes, Garima, we can hear you. And हमारे पास Can you see the first slide? slide. It is only first slide, 3rd Feb executive committee members meeting वाली slide आ रही है, first slide. गरिमा भी सिर्फ फर्स्ट स्लाइड ही दिख रही है, we can take it आगे इसको बढ़ा सकते हैं हम। Yeah, now we are back to the slide. Okay. ऐसे ही कर लो ना, ऐसे चल लो। Can you see the slide now, sir? Photos? Yeah, it's fine now. Praveen ji, may Yes, please it's visible. Okay, so with all these technical glitches, I think so. Just I was saying that one big project which we did with Times of India over 10 districts of UP, that was financial literacy and soft skill development training for different colleges. So that was done. Besides, of course, India Financial Literacy Conclave, 4th edition, which was done at Hotel Hilton. And the best part is that we had some very good takeaways. We had last month actually our advisory board meeting also, and we have deliberated upon the various. Is the slide visible on the panel? Yeah, right now we can see the photographs. Oh, The slide has got the glimpses of few programs done in 2021. I'm just going back into the slide for action points from my. Yeah. Now it's visible. Okay, so we had after the inaugural session, which was inaugurated by Reserve Bank of India Regional Director Shri Lakshmikant Rao ji, along with some other dignitaries. We had first session of women
women financial empowerment journey, and in that we are actually targeting to do some ground level programs. And first was actually because IFLC happened on 12th of November, and we did this program on Mission Shakti with Times of India from 24th November. And post that, we have not been able to do any on the ground program because of Omicron variant. But there have been a lot of programs on virtual medium, which we have done. So we will have some more programs planned on the ground level, especially with the skill development of women who are part of the Unnati self-help group. So these are the two areas where we will be working for women empowerment. Panel 2 was on MSME and startups. And the theme was bridging the gap between government schemes and its execution. तो यहाँ पर जो हमारा मेन एजेंडा था कि हम कैसे MSMEs को सपोर्ट कर सकें थ्रू आवर कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स, उसके लिए हमने 2 MOU साइन किए थे. एंड दिस सेशन वाज चेयर्ड बाय our additional chief secretary MSME, Shri Navneet Saigal ji. He was there, and so we have done these MOUs, and we now plan to actually work on a few areas with them. That is what is the plan for MSME and startups also. Yes. So can you see panel 3 slide? Panel 3 was on youth. Early financial literacy is key to enhancing financial empowerment. हम लोग चाह रहे हैं कि class 6, 7, 8 से हम कैसे basic financial literacy को हम बढ़ा सकें. Of course, colleges में तो हम लोग करते ही हैं, जो हमारे MBA और BBA colleges हैं. तो what we have done कि हमने काफी करीब 4 या 5 MOUs कर लिए हैं पिछले 3 महीनों में कॉलेजेस के साथ में. और उन MOUs में जो कोलैबोरेशन है हमारा वो यही है कि how we can impart certain financial education that will be done without any charge to them, pro bono, and also provide internship opportunities. क्या है? वो कर दो. Remote नहीं decline कर दो. ये क्या है? Remote कर दो. गलती से कर दिया. So इसमें हम लोगों का जैसे अभी नेशनल कॉलेज है, सनबीम वुमेन्स कॉलेज वाराणसी है, UPES देहरादून है, and also we will be soon signing an MOU with Lucknow University also, that is slated for 8th of February, and with the support of course Rajiv Pradhan ji and Dr. Madhurima Pradhan. So thank you for that. So we will be actually trying to increase our collaboration with universities and colleges, that how we can further our mission of financial literacy and other skill development programs also. And the 4th panel was on agriculture. Agriculture का जो topic था वो था risk mitigation, ways for financial empowerment of farmers. So farmers का जो risk areas है उसको कैसे कम कर सके उनकी ट्रेनिंग के दौरान. तो इस सेशन में हम लोगों ने करीब 10 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में MOU साइन किए थे, और उन MOUs के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम्स अभी इनिशिएट करने जा रहे हैं. तो पहला हमारा जो मीटिंग है FPOs का, एंड दिस विल बी हेडेड बाय आवर एडवाइजरी बोर्ड मेंबर श्री AK सिंह जी, who is former CGM NABARD. तो हमारा ये है कि हम उन FPOs को क्या ऑन द ग्राउंड लेवल पे एक FPO को हम पायलट करके ऑन द ग्राउंड हाउ वी कैन हेल्प देम. सो दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन. ओके. उसके अलावा NCDX के साथ में हम लोग प्रोग्राम कर ही रहे हैं. NCDX के साथ हम लोग रेगुलर जो नेशनल कमोडिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके साथ में हम लोग FPOs के लिए प्रोग्राम करते रहते हैं रेगुलर. उसको लो पानी. So last panel was on BFSI. तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर जो है
उसमें जो अपॉर्चुनिटीज है कैरियर की और तो आज के यूथ के लिए और उस इस सेक्टर का क्या रोल है इन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, दैट इज व्हाट वी वांट टू ब्रिंग आउट। तो उसमें जो हमारा मेन एक्शन पॉइंट यही था कि कैसे हम लोग साइबर क्राइम्स हो गए, उसके अलावा आज क्रिप्टो हो गया, these are the new areas where we need to help people educate। और हमने एक MOU साइन किया है BSc इंस्टीट्यूट के साथ में, और for lot of programs in the areas of algo trading, in the area of cryptocurrency, in the blockchain technology। So there are about 35 programs जो हमने उनके साथ MOU साइन किया है, and they have given us this exclusive rights for UP, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो ये 3 स्टेट्स में हम उनके प्रोग्राम्स को ले जा सकते हैं, और these are very good online certification programs which provide you knowledge and also open job opportunities। So this was about the conclave and जो उसके एक्शन एजेंडा आइटम्स हैं, और उस पे हम लोग अब थोड़ा सा काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उसको कर सकें। उसके अलावा जो आगे का हमारा प्लान है, रुचि पांडे also virtually connected, she will be actually associated with us for certain projects on the social projects, so she is part of Evoke India, and so we have put in last 3 months we have submitted our proposal for a couple of projects, one in Unnao and one in Sitapur with NABARD। These are also programs for women empowerment, mushroom farming का एक प्रोग्राम है, एक सीतापुर में ऐसे ही है। तो स्किल डेवलपमेंट और इसके प्रोग्राम्स हैं ये जो हमने सबमिट किए प्रोजेक्ट्स, जो अभी भी because they are saying that there are fresh approval of funds required, तो delayed है अभी, but in principle okay है, so hopefully we should get it। Praveen, sorry to interrupt. Yes। I find the dates for projects in pipeline are January 21, again March 21. Yes, this is a mistake, sorry, you are right, I think these are all dates which are wrongly mentioned, so we will correct it। So still Shivani is 1 year behind। I also could observe it, but Praveenji has rightly commented on it। No, so we will, I think you just assume it is all 22, second month में है, लेकिन सब 21 में लिख दिया, कोई नहीं बात नहीं। So just assume it is all in this year only। तो हम लोग 2022 की बात कर रहे हैं। और एक जो कोटक महिंद्रा बैंक का प्रोजेक्ट है CSR का, अगेन दिस इज ए ट्रेनिंग इन द एरिया ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज which provides the students, youngsters programs on mutual fund selling, on insurance selling, on other banking products। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक को हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है बॉम्बे में। सो उनके जो हेड ऑफ कोटक सिक्योरिटीज के हेड है, नेशनल हेड प्रेसिडेंट, ही वाज आल्सो हियर इन आवर कॉन्क्लेव। सो उनको दिया है। एक प्रोजेक्ट हमने सिडबी को सबमिट किया है, दैट इज आल्सो सिडबी का प्रोजेक्ट। यू वांट टू कमेंट ऑन दिस रुचि, आप बताना चाहोगी? Sir, hello. हाँ जी। Am I audible, sir? Yeah, audible, yes। Yes, so if I'll just brief everyone about the projects I have submitted. NABARD, Unnao and Sitapur are in pipeline. We were expecting it to be done in January, जैसा प्रवीण सर ने अभी comment किया था। तो ये जनवरी में होना था, but somehow because कुछ funds का issue था, funds approval बचा हुआ था, इसलिए it is still in pipeline only। Kotak, we have submitted a CSR, SIDBI and SBI, we have completed the formalities because आज ही हमारे पास ATG confirm हुआ है, so बस paperwork बचा था, we'll do it। And we have अलग में हमारे पास 2 अलग home के लिए already approvals आ चुके हैं, so possibly in next 5 days पहला अलग home हम इटावा में open कर रहे हैं apart from our office। इटावा में it will be done from 5th of February only, and दूसरा अलग home हम by 10th of February in गोमती नगर area only near उसड़िया चौराहा will be setting up।
तो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे पाइपलाइन में है। इसके अलावा हमारी जो बात चल रही है दैट इज विथ सेरा हिंदवेयर एंड UPES जो उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी हम एक टेक्निकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट. Other than that, we have a project with Dainik Jagran, which is in pipeline. We have sent them the proposals and we are waiting for their response. इसके अलावा we have signed MOUs with 2 colleges apart from National PG College and one Lucknow University on 8th we'll be signing. Apart from that, I am anticipating 2 more MOUs. One with Modern Girls College and the other one is with Lucknow Public College of Professional Studies, that is LPCPS. So this is the program. Here we'll be doing paid programs in association with NISM and SEBI, and also our skill development programs. So this is it. I would request if someone has any queries or any suggestions regarding this, then please let me know. Apart from the projects and the paid training programs, the camps we will be organizing. We have organized one camp, Jan 2020. It was written health and hygiene camp. We could not organize because of Omicron. Financial awareness camp, we did it, and children's health camp was done in December. Now cloth donation camp was to be organized, but we did not do it because of the Omicron virus. And blood donation camp is postponed till March. We have 2 more camps, upcoming events, which we will be organizing in February. One for the children and one for the women's sector. Women's sector will be doing it in Ayodhya. I have proposed it. So possibly by what I have planned is we'll be doing it on 20th February for women on health and hygiene only. So this is our projection, and this is what we have done for women and children as a whole. So, okay, thank you, Ruchi. What we are actually trying to do is that by March, we have at least minimum 2 to 3 projects which should be on the ground. We have done actually last 2 years. We have personally, I have also traveled, and we have done a lot of work for groundwork for getting projects started. But somehow what we have seen is that on our social sector side, we only could get limited success after 2019. Even we are also having a Swavalamban project of SIDBI, which also, so COVID has actually caused a lot of damage in terms of our reach. So our virtual reach through the programs which was happening was only through the programs which we have been doing pan India. हम लोग उड़ीसा में कर रहे हैं programs, आंध्रा में कर रहे हैं, दिल्ली में, महाराष्ट्र में भी हैं. So regularly हमारे programs जो हैं financial literacy के in various corporates में, colleges में and universities में, those programs are happening with the help of SEBI and NSC and BSc. But these projects also generally get over by January and February. So now we have to actually, for our revenue also, we have to see that how we get certain paid trainings and certain training from the college. Another very small project, but just to tell you that we have, there's a college called BSNB College in Charbagh here. उनके जो trustee हैं, Shri Mishra ji, he had called me. So we are doing, and they are again from economically very weaker section of the society. उनके जो students हैं, तो जो BCom के students हैं, उनके लिए हम लोग एक program कर रहे हैं, 3-session program on GST and accounting. Only GST का ही देखा जाए तो GST का उनका हमें 3 session program कर रहे हैं at a very nominal this thing, because they are so that is again college is doing it for each student with only 300 rupees. Which generally we charge 3,000 rupees on a commercial term. So this is just again a social service, but we want to, you know, as our mission is to help students understand finance. One session was done just before this lockdown. Hopefully colleges will open from next week, so we will have to do 2 sessions more there. So वहाँ पे हम लोग
GST का एक प्रोग्राम कर रहे हैं. Okay. And Divya Vishwakarma is our team. She's heading our all the investor awareness program coordination work with all our impaneled panel, जो हमारे trainers हैं all India. उन trainers के साथ में दिव्या coordinate करती हैं. जैसे और कुछ लोग coordinate करते हैं उत्तराखंड में plus उड़ीसा में, दिल्ली में. तो Divya, can you just share briefly that how many states? I think we have covered almost all 29 states of India. Yes, sir. We have. Yeah, so 29 states have been done, and so that's a big. I think it's a good achievement. We have done it, and almost 180 districts पे हमने program कर दिया. So Divya, anything you want to add? So we are just trying to, now we are in the moment where we can go to each and every district, as we have covered the states and the cities almost. So now we are focusing to all the district to reach out. Right. Also in the next financial year, with the help of all of you, अभी मेरी मनोजा जी से भी बात हो रही थी, कुछ प्रोग्राम वो गुजरात के लिए कह रहे थे, गुजरात में हम कर सकते हैं. आप सब लोगों के भी इसमें हम व्यूज चाहेंगे. I will just stop here because we started late and with technical glitch, and then now I will just hand it over to you. So just on, I'll just tell you what is the yeah. So I would request if everyone can spare 2-3 minutes, 4 minutes on your ideas, which Shivani and Garima will just note down. And we will try and work out on that. तो दो चीजें हैं, of course हम लोग अपना जो अभी membership हमारी है, that we want to increase so that more अलग home can be created. हम लोगों की just to reiterate, Above India Foundation की जो membership है, that is life membership of 2,500 and 1,000 annually, which Garima can circulate the paper with all of you in terms of what benefits one gets, and major portion of that money we use only for alak children now, as of now. As I had told in the last meeting, per student annual जो हमारा expenditure आता है एक बच्चे पे, उनकी uniform, उनका food, उनका teacher, उनका all other stuff comes to around 18,000 per student. So while we can look at certain sponsors for a student, but even if we can get more members at 2,500 life membership plus 1,000 rupees as an annual member, within that we provide also one ITR return filing free of cost, because we have our taxation and accounting services department here, which has one chartered accountant, one company secretary, and 2 accountants. So they can help you with any of the financial matters. That support we provide to all our members. Besides any other issue or concerns on the financial sector, complaints or anything, we can provide you. So that is one support we need from you to increase the membership base and also see how we can increase our social programs. Number 2 is that now with Arthvipra on its own, Arthvipra mein hum logon ki we will have our team which will actually work very strongly on the customers. आप में से कुछ लोग हैं, 1-2 लोग हैं जो कि अभी इनका investment Arthvipra manage करती है, हमारे executive body में भी और हमारे advisory board में भी, because we are not any time into that selling work कि नहीं हम उसमें sales करना चाहेंगे, लेकिन of course when we can provide that benefit to open market, why not our members and our executive members also benefit from that. So number 2 Arthvipra में भी आप उसका हम एक बार presentation और separately करेंगे, so that also will do number 2 point. And number 3 is that in terms of our programs on financial literacy. So these are 3 areas: financial literacy, awareness, or any other social activity which you think. So, Shivani, you can note down 3 points which we will be, I think, seeking input, suggestions. Besides that, any other thing which you feel, I think, which will be of relevance and importance. So I welcome your inputs and thoughts. So maybe if I can start with Praveen Kumarji first, and then after that, one by one, everyone can share. Okay, since you have
taken my name. So one, I would suggest, why not have programs for the ombudsman in insurance? I had a personal experience with mis-selling of some insurance. Stop sharing. You can hear? You can hear? Yeah, we can hear you, sir. Yeah. I was saying that why not we have programs on the ombudsman, which is very important in resolving the issues in the insurance sector, banking sector. And I had a personal experience in 45 days flat. One of my issues of insurance mis-selling was resolved very amicably through insurance ombudsman at Lucknow. This is one. We can, for the banking ombudsman also, because grievance redressal is the fastest and the best. That's the, rather than going to the courts. Number one. Right. Number two, some education for the people on their wills and how to prepare a will, how to make a will, a joint will, and execution part. And perhaps in AWOC itself, we can have a vertical which takes care of these wills. Not only they take care, they are also, in my will, I have put AWOC India are my merchant bankers. So in any case, and I have given the address and everything there, so that my sons can approach AWOC India when they are in India, when we are not there. Number three, lots of cross-selling by the banks is also, I wouldn't say, but then really is mis-selling also, where especially the community like doctors who are busy with their own profession. Why not we also have a MOU with IMA and the different chapters of IMA? I had a word with my brother-in-law at Bareilly. He's a doctor. He's a very prominent doctor. And IMA Bareilly is a very, very active IMA. Why not have programs with them on a physical basis? They have got auditorium. They have got every equipment which we need. And we need not spend anything on that. Perhaps they can, IMA will make all the arrangements. So the medical community, and also maybe have a MOU with KGMU, or these 3-4 points. I was wondering, these are the areas where financial literacy, as well as some services, paid services can be added. Right, And of course, sick units, which is my love area, but then I would not take it to that level right now, because IBC and the sick unit, and that is something which may be seen when we take it to the next level. Yes. So for actually MSMEs, we can think of programs on sick units, so stressed assets and all. So that also we can plan. Sure. But thank you for all the 4 points. I have just jotted down. We will. So before we move to the people who are physically present, Rajiv Pradhanji, you want to share your thoughts? Certainly, sir. While taking it forward with Praveen ji views, we can certainly consider for something for our bankers also, because I mean, you too and I too have been in touch with many of the bankers. They really need such kind of things from your side. They are looking for. I can get a few bankers associated with the AWOC India Foundation, which I have shared earlier also, and we can take it forward accordingly, sir. Right. Yeah. No, I think that's a very important area. For bankers, even retired bankers, like we had recently done a program for Aryavarta Bank on the leadership management. एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था उनके लिए हमने, but there are multiple areas where bankers are looking for training partners, and which is where we can look at them being for stress management or leadership management or even HR management. तो बहुत सारे programs ऐसे हैं जिनका interest होता है, which they look at good training partners, तो उसमें हम लोग काम कर सकते हैं. Certainly, sir, this is what I meant to say. We are in
wherein Awok India can associate for such training programs, can join hands with them, with the bankers in Correct. this direction. Right. And also, actually, we have got few of the chartered accountants and some of the bankers also as our associates under Arthvipra Finvest. So they are actually working as an associate or a franchisee kind of people. So that also could be an area which can be explored, so that we can discuss and do that. So thank you, Rajiv ji. Now we have. I think Kirti ma'am has to say something. Yes, She's yes, raising yes. her hand. You can just get Unmute yourself, Kirti. Please, ma'am, unmute yourself. Yeah, I would just like to, since I've been a teacher all my life, I would like to see that Awok India gets involved with various teaching setups in the rest of Uttar Pradesh, in the villages and other places. So I was wondering, hello, can you hear me? Yeah, we can. Yeah, of course. So I was wondering, like, for example, if there is a village in Gorakhpur in East UP, and we have some qualified underprivileged girls who have done their B.Ed or they're qualified to teach. So is there any, can Awok India take up this issue of getting them some kind of positions there in these smaller schools where they can, at least hone their skills and feel more self-confident, where we are talking about women's empowerment. I think this is a very important factor. So I would like to know from Praveen ji if there's something is being done in this area. No, I think that's a very important point, ma'am. I think what we can do, I'll just apprise you another tie-up which we are doing. While we have had tie-up last year with Cambridge University Press on the communication and soft skills, but recently we are also talking to another organization in Mumbai, which is again into English communication for these smaller towns. And they have a very, problem mostly happens in these towns, people who are educated and have certification, when they go into teaching or any other vocation or job, is that they are not able to, express themselves. So if we can pick up that area and if we can empower them or build capacity in that area, so that is what we will plan. And this has been one thing which we have been discussing in the board meeting also, that how we can actually look at picking up one particular area, say Barabanki or some other close by area, Unnao or Barabanki, where we can set up a pilot first, where we have the approachability and we can reach there easily, and all of us can go sometimes and spend time and educate them. So I have noted down this point, and we will certainly work. Or even Eastern UP, because I have personal knowledge of girls who have studied, who have done their BA and B.Ed and all that, So what the new education policy actually says is that these kind of they have to be trained a little bit, as you're saying, in their communication skills. So, but that we'll have to encourage them. And, because the attitude of their in-laws or their fathers and mothers is that, "Arey ladki hai, usko kyun padhaya?" Usko padha to diya, lekin ab naukri kahan karegi? That kind of an attitude. So I feel a certain skill development of the teaching methodology is important. And I think we'll be helping a whole lot of girls in these places, especially Eastern UP and Eastern part of UP, any of these places, yes. And of course, Barabanki and Sitapur is there. So I thought, what do other people think of this idea? I don't know.
But I'm So very, that's a very, I think, relevant area, because when we went to Gorakhpur last program we had done in IMT college in Gorakhpur, and we found a lot of girls actually were very keen to pick up these learnings. So we can develop that program and module. I'll tell you the program which we are going to do now in Uttarakhand. That is also for security guards. We are doing basic, we say computer literacy and communication. उनको कैसे अच्छे से इंग्लिश में थोड़ा बोलना आता हो, so that अगर उनको आगे बढ़ना है तो they can just use this learning. तो हम लोग ये 84 hours का एक प्रोग्राम कर रहे हैं उनके लिए, प्रोजेक्ट हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं. तो इसी तरह का कोई प्रोग्राम हम लोग कर सकते हैं वहाँ पर गोरखपुर में, and which will, I'm sure, be very helpful. So we can work on that. because So, teaching is thank you. very crucial, you know, in these places. Yes, yes, So, yes. and giving encouragement to the girls is very important. Right. So we will work on that. Thank you very much, ma'am. So anybody else is online, or we can just move here. Now before we, I think, begin here, people who are Rajiv तो हो गया ना? हो तो गया? So now we have actually, as I said, we initially welcome Shri Rajiv Kumar ji, who's a retired IFS officer. So I will request him to introduce himself, and he is now joined our executive committee, and he will be, just move this like this towards him. And he will be starting his with the introduction and then his inputs. Good afternoon, everyone. I am Rajiv Kumar. I belong to UP, Odisha district of UP, but settled in Lucknow. I am a 1983 Indian Forest Service officer and allotted Uttar Pradesh cadre, and remained in different positions in the government of UP and government of India, and retired in 2015 as Chief Project Director of UPP, Uttar Pradesh Participatory Forest Management and Poverty Alleviation Project, which was supported by JICA, Japan International Cooperation Agency. After retirement, I have been associated with MIT Group of Education. I am the Vice President for MIT Foundation for Environment, Forest and Climate Change. They are the different universities all over the India and abroad also. I am also the chairman of State Expert Appraisal Committee. This is a committee, I think all of the persons are here from the financial side. They must know that right now, any big project, finally they have to take the environmental clearance. Like you have to construct a building, its built-up area is more than 20,000 square meter, it requires an environmental clearance. If you do any kind of mining, you will carry environmental. If you do establish any industry, they are in different category. So I am chairman of that committee in the state. This committee is the central government for the state of Uttar Pradesh. This is my brief introduction. Regarding my suggestion, I think it is very early to give some certain suggestions, but definitely I shall like to comment on 1 or 2 points. One is because in this JICA project, we had a long experience of working with self-help groups, especially related with the women. And we had, I think, around 2,500 self-help groups in 14 districts of Uttar Pradesh. And regarding these SMEs, precisely we had 3 kinds of activities. One was known as forest-based livelihood activities. Second is natural resource-based livelihood activities. And third was non-natural resource-based livelihood activities. Other than Tarai region of Uttar Pradesh, Mirzapur, this Vindhyan areas and Bundelkhand area, so far as these 3 areas are concerned, we have a lot of potential for these forest-based SMEs as well as for natural resource-based SMEs. But so far as other districts are concerned, we have to focus mainly on non-natural resource-based activities. One thing more, we study at that time, and in Tamil Nadu, the loan repayment by the self-help groups, especially of the women, it was almost 100%. But so far as man-woman self-help groups was concerned, the loan repayment was quite less in comparison to women.
And even in our Uttar Pradesh, we observed this thing that the women self-help groups, they were doing very, very nicely. And as just Madam was pointing about the women empowerment, I remember incidents of the Bahraich district. Bahraich district is, I think, the Mohammedan population is quite high, but I am casting any aspiration on a particular region. But I am saying you the fact. And there was we made certain self-help group, probably 3 self-help groups in a particular village, and many self-help groups different. And we had a program there. So one lady, one Muslim lady, she was telling कि देखिए जी, आपने तो हमें आदमियों से आजाद करा दिया, पर्दे से फुल्के से बाहर निकाल दिया, वरना हमारे आदमी तो हमें कुछ समझते ही नहीं थे. This was a statement of an illiterate lady from a village, and she was telling this in her speech कि देखिए जी अब हमारी value बढ़ गई because we have started earning something. So I think this particular aspect of this woman empowerment and through formation of the self-help group, I think this is definitely a very good social cause by the Evoke India, and we should try to accelerate it as much as possible. And even I think, even the government, because there is already different agencies by the government, those are also funding. We can get also in this thing some corporate social responsibility fund or something like that. Just about the children education again, 1 minute I should take. I should not take much. This children education program, what I am observing in Gomti Nagar where we are sitting, this I am telling from my own experience. A number of persons, they are coming from the villages, they are settling there, their children are settling there. But by chance there is no government school, primary school or secondary school in this area. All these schools which are by the private agencies, they are, for the namesake, they are English medium. And for a village child coming from the village, of class 3, class 4, class 5th standard, it is easy for him or her to understand in Hindi rather than English. But unfortunately, just either to make the fees high or whatsoever it may be reason, in this particular area, I have not found, because I am again telling this thing from my own experience, because I searched that school for the sons and daughter of my person who is working with me, and I couldn't find any school. So finally, we got him admission in an English school. अब problem उसकी यही हो रही है. I am finding they are living with a problem कि they are very good in mathematics. क्योंकि उन्होंने math पढ़ाया, they became good. लेकिन when it comes to the understanding English, और ये they are very. So I think if we can think in this direction and work something, it will be really a very good service for the downtrodden class of the society, especially in the areas like Gomti Nagar and big areas where all the affluent people are there. But there must be some arrangement for these things. Very much. Thank you, sir. Thank you very much. I think it is very important language skills और जो आपने हम लोगों ने कुछ programs सर के साथ virtually अपने environment day में, World Environment Day में और जो एक concept होता है वन महोत्सव, तो ये वन महोत्सव में और environment day में हमने आपके साथ 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम किए हुए हैं. और this has been very enriching, experience to understand about how much forest can give us, how much. So environment is going to be a very important subject. अभी हम लोग एक कार्यक्रम में थे from आपको Rajiv Gandhi, also remember Rahul Singh from Singapore, he was there, and what he was talking about consciousness capitalism and impact investing. तो अभी फाइनेंशियल सेक्टर में सोशल जो कॉज है वो बहुत ऊपर आ रहा है. Environment, social and governance, ESG sector एक है. ESG is very important sector जहाँ major investment हो रहे हैं. तो companies के लिए, corporates के लिए आज उस पे focus करना भी बहुत important है. So we will certainly design a program actually on ESG. So that will also help. Then I will take the help of Rajiv ji. That how MSMEs, जो आपने बात कही, उस कैसे उस चीज को वो आगे for the natural resource based livelihood and also for the forest based livelihood programs को हम करें. So whatever activity. So thank you, sir. Yes, ma'am. I'm Pratibha Tiwari, retired from Union Bank, and I'm also
panels of इसके हिसाब से क्या है member of multiple panels. चेंज कर दो बिल्कुल चेंज कर My suggestion, ग्रेड साइड से भी होगा उधर उधर ग्रेड भी या तो आपकी आवाज आ रही नहीं आ रही प्रतिभा जी की साइड नहीं अपना जोर से बोलिए आप इस पर नहीं ठीक है मैं जोर से बोलती हूँ. Everybody knows me otherwise. I am Pratibha Tiwari, retired from Union Bank of India and a member of IBPS also at present. My suggestion, as such, everybody has given a good suggestion, but my suggestion is that whatever members we are, we should also give some contribution to the alak students and the downtrodden children, as you have said, that we can come on one day and we can at least teach them or do some service, whatever is planned in your district. Secondly, whatever certification courses are being done by Evoke India, people are not knowing about it. Although there are very many students who want to do these certification courses because that will definitely give them a job opportunity. But people are not knowing about it. So there should be a little ad or something like that, or a board somewhere, or pamphlets, or in news or something like that. So that is very necessary because I know many people who want to do the certification. So that is very important suggestion. Actually, काफी लोग पूछते रहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक सर्टिफिकेट करना है, इन्वेस्टिंग करनी है या क्रिप्टो में करनी है, तो उसके लिए and more people want to do online. ऑनलाइन हाँ. So एक तो हम लोग का सजल यहाँ बैठे हुए हैं, तो एक तो ये है कि अभी आप सबको मतलब एक ब्रोशर या टाइप हाँ, that is very good. So that we can tell them. At least आप लोगों को पता ही है. That should be number one. And number two, जो आपके पास जो हम लोग बनाते हैं अपने रेगुलर कम्युनिकेशन जो हम लोग पोस्ट करते हैं, वो आप सब ग्रुप में जरूर डालो. So that I think you can note down because that is important. So that people who want to take up these courses, they can do that. So that is important. And thirdly, there are some investors who want to know exactly कहाँ हमको आजकल कहाँ इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में कौन से म्यूचुअल फंड, लाइक थोड़ा सा इलेबोरेट हो आइडिया. क्योंकि there are investors from banks who retire but they want to invest but they don't know where to invest the money. Correct. And on which portfolio. Correct. तो वो थोड़ा सा नहीं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बैंक से, प्राइवेट बैंक से या प्राइवेट लोगों से इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लालच में आके या नॉलेज की कमी से, और वहां पर ऐसा भी अभी बताया रवि कुमार ने भी कि मतलब बहुत से लोग मिससेलिंग में फंस जाते हैं. तो एक सही एथिकल और ट्रांसपेरेंट और एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए चाहिए, जिसको कि हम लोगों को अब फोकस प्रमोट करना है. उसके सेशंस भी हम लोग अब रेगुलर करने जा रहे हैं. मतलब फरवरी itself हम लोग का एक प्लान है कि हम लोग आर्थिक की तरफ से 5 या 10 फैमिलीज को we will start hosting sessions. and आज ही मेरा डिस्कशन हो रहा था टाटा म्यूचुअल फंड वालों के साथ में. तो उनका एक रिटायरमेंट प्लानिंग का सेशन है जिसमें टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है और एक अभी बैंक के बहुत सीनियर मतलब लेवल के पर्सन है, उनको मैंने वो सजेस्ट किया दिल्ली में, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड टू अंडरस्टैंड. हम लोग क्या करेंगे कि 5 लोगों को जो कि जिनके पास टाइम निकाल सकते हैं, and that will be husband and wife will have to come for that session over some high tea at golf club, and that is a venue decided, and we will do a focus session on your need analysis. तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है फंड मैनेजमेंट को लेकर के, आपके कोई भी कंसर्न है, वो हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल प्रोवाइड सॉल्यूशंस. बिल्कुल बिल्कुल. Even I was a very educated person. I didn't know मैंने LIC में कर दिया. He told me 5,25,000 मिलेगा आपको 2 में इन्वेस्ट कर दीजिए. When I saw the exact amount, मुझे क्या मिला 1,49,000. Correct. So वही होता है, you are right. क्योंकि because we are not aware उस समय इन्वेस्ट आप भी बन गए ना. तो ये बहुत सभी लोग पता, हम लोग तो बहुत केसेस देखते हैं ऐसे. सबने किया.
या बैंक में itself, बैंक में बोलेंगे कि आप यहाँ नया account Because बैंक में भी वो टारगेट्स होते हैं, तो टारगेट के लिए हम लोग को अपना कुछ भी बेचना होता है। वो FDR बनवाने आए उनका सब लाइन में डाल दिया, कोई इसमें लोन डाल ले लिया है दिया। तो उसका करवा दिया, वो नहीं रहना चाहिए। It is a customized solution to will plan that. तो वो थोड़ा awareness ये है नहीं नहीं। वाला जो आपने किया है वो हाँ, जरूर yes, yes. So we will do that focus sessions. Focus group session इसको बोलेंगे. Focus group discussion. नहीं, even for us also कि जो म्यूचुअल फंड अच्छे आ रहे हैं, जो कोई इस उसके लिए- तरीके का, तो हाँ, keep on putting या that. नोट कर लो शिवानी, Putting that in the WhatsApp group. फोकस वर्ड लिस्ट होती है ना हमारी, हाँ, वो भी ग्रुप पे जानी चाहिए। जानी चाहिए, तो हाँ। लोग can, I can जैसे tell others हाँ, also. मतलब जैसे अभी भी हम लोग थोड़ा सा भी वर यू नो in these 2 ways we were separate. अभी हम लोग जैसे इस समय एक इन्वेस्को का फ्लेक्सी कैप फंड है, which is a very good fund, इंटरनेशनल फंड है, इंटरनेशनल कंपनी, बट उसका तो that fund we will, if you advise you, and it is closing on 7th of this month. तो जो लोग इन्वेस्टेड हैं हमारे साथ, जैसे मान लीजिए आशुतोष निगम जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, तो उनको तो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, बिकॉज वो अगर उस ग्रुप में हैं, दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड विद अस, तो उनको तो हम वो इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, लेकिन बाकी लोगों को जनरली हम नहीं भेजते हैं, बट वी विल स्टार्ट सेंडिंग दैट। तो उससे आपको नॉलेज रहेगी। आपका भी इन्वेस्टमेंट है तो आपको भी खैर आपकी होगा थोड़ा वो, तो दैट वी विल डू। आती है, लेकिन I am not able to understand. अंडरस्टैंड, यस यस, somebody has to call and explain, तो थोड़ा सा कोई कुछ बता दे तो बता हाँ, दो। so that's Sometimes I go through that, but I am not you're not able to able understand. कभी पूछती हूँ। हाँ, no, we should have more sessions on financial, investment side. तो एक तो होता है हमारा अवेयरनेस पे, अवेयरनेस इज वेरी बेसिक लिटरेसी, बट जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे प्रोग्राम होता है वो हमें पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड या उस पे करना होगा, दैट इज और उसका क्या प्रवृत्ति थी? अगर मुझे मालूम होगा तो ये बताइए। Tell why people move. कौन आती है? हाँ, आपने रिटायरमेंट के बाद कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ मुझे करना चाहिए? yes, मुझे ही नहीं पता तो कैसे पता? करेक्ट। तो वो हम लोग का अभी भी मतलब जो मेजर बिजनेस हम लोग का अर्थव्यवस्था में होता है, इट इज ओनली एंड ओनली विद रेफरेंसेस, वी डोंट हैव एनी सेल्स टीम अभी तक। हम लोग सब रेफरेंस से ही लोग आते हैं, कोई एक हाँ है तो आपको मालूम होगा तो आई थिंक इट्स रेफरेंस ठीक है। करेक्ट। आप बेसिक एसआईपी का जैसे आप देख लीजिए, एसआईपी में जिसने भी किया होगा इस समय रिटर्न मिनिमम एसआईपी का रिटर्न 25-26% है। लास्ट 5 ईयर रिटर्न इज 25-26%, ठीक है। सो आई डोंट नो, अगर आपने सीखा भी नहीं तो यू शुड फर्स्ट थिंक, तो कम से कम मिनिमम 5,000-10,000 के एसआईपी तुरंत कर देनी चाहिए विदाउट एनी सेकंड थॉट। सो दैट वी विल वर्क, एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो थैंक यू। यस सर, प्रवीण सर, मैं प्रतिमा जी की बात को पूर्णतः समर्थन करते हुए एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड टू हर वर्जन, even we bankers are trapped within our own bank's FDR, और हम अपने बैंक के FDs में उलझ के ही रह जाते हैं। We don't think of this mutual funds and SIPs। तो इस दिशा में कुछ वास्तव में ज्ञान विस्तार करने की आवश्यकता है, and Arthvipra can take a lead in this direction, sir. Thank you. बिल्कुल, we will have I think couple of sessions exclusively for this, so that more people can get this knowledge and invest into these things. Thank you. Yes, Atul ji. Good evening. I'm Ashutosh Nigam, retired from Nagaland. As so many suggestions have come, and this is very fast changing and developing area, financial investment side, and things are moving so fast that it's very difficult to keep track of the things. So what I suggest is continuation of the training sort of programs, covering the developments, recent developments, or the developments that may take place in the near future, and the focus has to be on financial awareness. So we find ourselves, although we have been working in this field, financial field, but we find ourselves lacking, as we are not coping up with the fast developing changes that are taking place. So the focus has to be in the area of
up-to-date planning and the changes that are to come. And particularly, we people have invested a major chunk of our savings in FD. And we are very hesitant to change our portfolio. So this is all due to lack of current education, proper education. So the suggestions are many, and we have heard several suggestions right now. So the need of the hour is to plan the things in such a way that we get some concrete input to act upon. So I would request Praveen to do at least something tangible which can be pursued by us. And I would suggest these programs for the persons who are likely to retire in 5-10 years. So that program is the need of the hour. And the persons who have retired for the past 5 or 10 years and they are keeping their funds 80-90% funds in FD only. So this can be done by Thank you, sir. Thank you. I think ये बहुत ही important point है, जैसा कि पीछे एक दो बार discussion भी हुआ आपसे निगम जी से, लेकिन वो आगे बात नहीं हो पाई। जैसे कि 80-90% लोग आज भी पैसा वो FD में, आज मेरी अपना जो एडवाइजरी बोर्ड का ग्रुप है उसमें कुछ बात चल रही थी। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था जिस दिन बजट आया उसके नेक्स्ट डे, शायद मैंने पता नहीं भेजा आप लोगों को, मैं भेज दूंगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि मतलब न्यू एज इकोनॉमी है, हर आदमी हर चीज तो नई एज में आ गया है, जूम पे आ गया, टेक्नोलॉजी पे आ गया, लेकिन जो हमारी आज भी सेविंग और इन्वेस्टिंग हैबिट है वो वही पुरानी चली आ रही है। तो वो बदलाव नहीं जब तक आएगा तब तक हम कोप अप नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो ये बहुत जरूरी, जो रिटायर होने वाले उनके लिए भी और जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए भी, इट इज इम्पोर्टेंट दैट दे अंडरस्टैंड दिस थिंग्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। सो हम लोग इस पे और भी कार्यक्रम करेंगे। यस सर, मनोजा सर। Because we had an experience of call setting and all that. Risk management together. Right. Other thing, more secure schemes and Right. ये तो आप हम लोग को इस पर भी एजुकेट करिए, आई पुट सम lump sum amount quarterly और जैसे हम लोग को बैंक से मिलता है ना, what we can get, Correct. how we can take that, So हमारे even we are also not aware about. हाँ, सो वही मतलब ये चीजें कई बार हम लोग बातों में नहीं ला पाते। हमारे एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर है, वो आज नहीं ज्वाइन किए हैं, उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया इस तरह की स्कीम में, जो मैं बता रहा था रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। अब ही इज विड्रॉइंग एवरी मंथ 50,000 रुपीज एंड 50 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और आज 50 लाख की वैल्यू ऑल्दो एक साल में 65 लाख रुपए हो गई है, और 50,000 निकाल भी रहे हैं। तो पॉइंट वही है कि आपको ऐसी स्कीम्स हैं, लेकिन अगेन दैट इज समथिंग व्हिच इज एटलीस्ट 2-3 साल का आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाउ इट वर्क्स। सो उन चीजों में आप लगा सकते हैं फंड्स की, कुछ रेगुलरली एवरी मंथ लगाते जाएं आप, मतलब मिनिमम रिटर्न आपको 10 से 12% का रिटर्न, उसमें मिनिमम 16 एवरेज परसेंट 10 साल का रिटर्न। तो अगेन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होती है, या अगर कोई बता रहा है तो जो लोग बाकी लोग बताते हैं वो ऐसी स्कीम बताएंगे जहाँ पे कि उनको कोई फायदा हो रहा है। हम लोग ट्रेडिशनल करते थे इंश्योरेंस, अब नाउ इट्स मैच्योरिंग, आई वांट टू इन्वेस्ट समवेयर। करेक्ट, बट आई डोंट वांट टू हैव एफडीज इन द बैंक बिकॉज़ हमको रिटायरमेंट फंड में ऑलरेडी लगा है। राइट, सो नाउ वी हैव टू इन्वेस्ट दैट। करेक्ट, So that yes, yes।
राइट। हाँ, विल वाला जो पॉइंट था, विल का पहले भी प्रवीण कुमार जी ने भी बोला और पनोचा जी भी बोल रहे हैं। हाँ, तो हम लोग करते हैं विल पे अलग प्रोग्राम करते हैं हम लोग। स्टेट प्लानिंग का एक प्रोग्राम होता है विच वी डू, तो वो एक प्रोग्राम हमने नोट कर लिया है एक्चुअली। वो दैट प्रोग्राम वी विल डू एंड सर्कुलेट टू एवरीवन। और फॉर्मेट है हमारे पास, आप लोगों को शायद मिली होगी। हमारी जो एक माई फाइनेंस डायरी है हमने दी, उसमें है। तो हाँ, हाँ, क्लेम करने में करेक्ट, राइट राइट। सो नहीं, विल का जैसा कि हाँ राइट, ये दरवाजा बंद कर दो, डोर बंद कर दो। यस यस, ठीक है सर, दिस विल नहीं, हम लोग विल का एक अलग सेशन करेंगे और विल का जो फैसिलिटेशन भी है वो भी वी कैन गेट इट डन। मतलब हमारी टीम में भी लोग कर सकते हैं, लेकिन एक लीगल एक्सपर्ट है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, he can also do it। हाँ हाँ हाँ, वही नहीं, वो एक्सक्लूसिव एक हम प्रोग्राम करेंगे वाला, इसमें कि सारे आप लोगों को जरूर यूज करेंगे। स्टेट प्लानिंग का बिल वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत दिक्कत होती है इन्वेस्टमेंट कर गए और आपने बाद में देखा तो वो कंपनी जो है दर्शाएंगे। हाँ, आप निवेश होते हुए बिल्कुल आपको जो बताएंगे हम लोग आपको राइट। So the program on bill is very important that we will do। आप ये बोलने के कम्युनिकेशन होने के बाद भी किसी परेशानी आपको। यस सर, मैं केवल 2 पॉइंट्स पर चर्चा करना चाहूंगा। पहली चीज तो एक है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का है और दूसरा है माइक्रो एंटरप्राइजेस। क्योंकि जैसे अभी दुनिया पहले से प्लेट होने का नाता है और एक बूंद भी या एक पेड़ लगाया गया वो आपको इतनी ऑक्सीजन देगा, क्योंकि कोई फैक्ट्री नहीं ऑक्सीजन देगी, पेड़ ही देंगे। और दूसरा है हमारे गांव आज भी पुराना जीवन जी रहे हैं और खासतौर पर क्या है, हमारे जो महिलाएं हैं, खासतौर एसएसजी वुमेन फॉरवर्ड वाली बात भी चल रही है। अब बहुत छोटे एसएसजी तो बन जाते हैं, लेकिन उनको कैसे एम्पावर करें। और मेन चीज ये आती है कि एसएचजी हमारे जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेस हैं, खासकर महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए आजकल क्या है, हमारे आजकल ये प्लास्टिक के बैग बंद हो गया है। अब आजकल एनवायरमेंट फ्रेंडली बैग बन रहे हैं, उनकी लागत बहुत कम है। अगर हम एसएचजी के मेंबर्स को एक मशीन और उनको थान जो आता है बहुत सस्ता आता है, चूट का भी थान कोटा से आता है, यहाँ लोकल भी अवेलेबल होता है। अगर हम उनको दे दें और वो किसी अपना मार्केट में थोक के भाव, तो उनकी लागत मुझे से 50 पैसे से 75 पैसे और ये कम पड़ती है, काम लिया जाता है। और अगर हम अपने महिलाओं को बना करके और हर दुकान में, चूंकि आजकल तो हर कोई चलाती है, और हम पॉलिथीन के बैग से इससे छुट्टी पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। जो हमारे नालियां और सब बच्चों होते हैं उससे हमें मिल सकता है। और जो हम आजकल ये सुन रहे हैं एनवायरमेंट की और कहाँ एक ये दूसरी चीज है, मेरी एक अपनी इरादा रहता है, जिससे माइक्रो प्लानिंग 3M की बात करता हूँ। 3M में है माइक्रो प्लानिंग, माइक्रो एंटरप्राइज एंड माइक्रो मार्केटिंग।
तो हमारा जो गांव हम ये अडॉप्ट करें, जो एरिया हम अडॉप्ट करें, तो हमें एक जो है इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एंटरप्राइज, प्लान मार्केटिंग और उसकी प्लानिंग पहले से करना है। ये तीनों करके अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हम अपने गाँव का जो है या हमारी महिलाओं का या किसी क्षेत्र को हम लोग अपने पैरों में खड़ा कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में मैंने एनवायरमेंट सेक्टर से बात की। आजकल देखो कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है और क्या क्या की बात हो रही है। क्योंकि मैं नीम से जुड़ा हूँ और अभी हमें इसके कई सारे, क्योंकि मैं कंसल्टेंट टू आपका जेल का जो प्रोजेक्ट है और जहाँ 2-3 प्रोजेक्ट्स की मैंने इसका एवोल्यूशन स्टडी की बुंदेलखंड और कई जगह है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पाया है कि अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और लोकल एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें, और साफ तौर पर क्या है कि आजकल जैसे हर्ष है, इतनी डिमांड बढ़ गई हर्ष की कि हमारे गांव के जो है तुलसी और ये जो हमारे लोकल वो सब उखड़ रहा है। अब वो उसके बीज नहीं मिल रहे हैं, वो जल पूर्णा बंद हो गया गाँव में, क्योंकि अभी हम बुंदेलखंड और मैं चूंकि मैंने वहाँ कई से कलेक्शन भी किया। नीम का भी लास्ट ईयर मैंने जो है 2-3 साल पहले मैंने 36 टन का नीम चीज यहाँ कलेक्ट कराया। अलग सीतापुर भटोही मतलब अलग था, उसको मिलाकर 60-50 कर गया होगा। लेकिन एक शेल्टर जो भटोही मैंने स्वयं विजिट किया था तो वह 36 टन हमने वहाँ कलेक्शन किया, एसएसजीज कराया था। लेकिन दे वर नॉट कलेक्टेड ऑन साइंटिफिक बेसिस, तो उसको मैंने थोड़ा सा बहुत ज्यादा हाईलाइट या बहुत ही रेगुलरली नहीं समझा। पर अल्टीमेटली हमको इको को जो है उन्होंने तो 5-6 रुपये खरीदा था, हमने 10-12 फिर 13 रुपये में उसको, जबकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको 20 रुपये मिलेगा, बट दैट कुड नॉट हैपन। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि हमें अब गांव की ओर जा रहे हैं, एसएचजीज की जा रहे हैं, तो अगर हम एसएचजीज के महिलाओं को छोटी स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है उनके खेतों में अगर उनको सलाह दें वो तुलसी उगाए। तुलसी की इतनी डिमांड है, हर घर में आजकल तुलसी का काम चल रहा है, ये चल रहा है, आपका कालमेघ है, मैं आपका क्योंकि मैं आर्यचार्य हूँ तो मुझे चूंकि नीम का भी मेरा है, मैंने अटेंड बुक्स ऑफ नीम एंड डिलीवरिंग लेक्चर्स अक्रॉस द स्टेट एंड इवन बियॉन्ड दैट। तो हमें अगर हमारे जैसे मैं हमें तो सोचता हूँ कि नीम की चर्चा करते हैं, मेरा नीम को होती है, मेरा कोई भी दूसरे क्लास में जाता हूँ फाइनेंस का भी, वहाँ पर मेरी नीम की चर्चा होती है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर गाँव में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जिन गाँव को हम अडॉप्ट करें तो उस गाँव को हम कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे करा लें कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज किस तरह के पेड़ हैं, किस तरह के हर्ब्स होती हैं और कौन किसान क्या क्या कर सकता है। खासतौर ऐसी चीज क्योंकि अभी भाई साहब ने कहा कि महिलाएं जो है वो नाउ दे आर फ्री, अभी तो फ्री नहीं थी, फाइनेंशियल पार्ट तो डायरेक्टली हस्बैंड पे डिपेंड करती थी, अब आजकल नाउ दे आर लर्निंग टू देयर हस्बैंड्स। मैंने अभी मैं जालौन जिले में काम देखा था, मैंने मोर देन जो है 700 एसएलसी बनाए और मेरे वहाँ किसान क्लब्स हैं, हमने 40 मार्केट्स लैंड किए, हमने बाजार बाहर नहीं जाइए, क्रिएट योर मार्केट इन योर लोकल विलेज। और क्या हुआ तो सारे गांव लोग धंधा करने लगे। अब मैं 14 मार्केट्स में आज ही 7 दिन है, और जब वो गांव के लोग आते हैं उससे मिलते हैं देन आई फील प्राउड। यस, एंड दैट वे आई हैव टू डू। नहीं, ये विलेज वाला जो हम लोगों का, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये हम लोग आगे भी मतलब जो प्रोजेक्ट्स अभी रुचि जो प्लान कर रही है उस प्रोजेक्ट्स में भी हम लोग उन्नाव में, सीतापुर में कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें का इंटरवेंशन लेके आए हैं, ताकि whether it is about तुलसी और नीम, तो जो भी प्रोजेक्ट इस तरह के हम वहाँ पे कर सकते हैं, दैट वी विल इन्वॉल्व। एंड इसी के साथ में एक चीज और, अभी हम लोग के पास पहले 2018 तक कुछ कमेटीज थी, लेकिन फिर 19 के बाद से वो कमेटीज में काम मतलब फॉर्मुलाइज नहीं हो पाई थी। और मैं इस बार की मीटिंग में प्रपोज कर रहा हूँ कि हम लोगों की जो कमेटीज है, स्पेसिफिक सेगमेंट वाइज कमेटी, उसको हम लोग वापस से कॉन्स्टिट्यूट कर दें। और उस कमेटी में मतलब मैं जो नाम प्रपोज कर रहा हूँ, आप लोग एक बार बताइएगा किसी को अगर तो चेंज करना। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी की बात हुई, उसमें अगर राजीव जी आप एनवायरमेंट और उसमें सस्टेनेबिलिटी कमेटी को आप उसमें ऐड करें तो दैट विल बी वन। एंड ऑफ कोर्स साना जी भी उसमें है, और जो हम लोग के बाकी मेंबर्स हैं उनको हम लोग एक बार अप्रोच करेंगे, उसमें से कोई और भी
उस रिलेटेड फील्ड से है, तो एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कमेटी में हम कर सकते हैं। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में हमारे साथ डॉक्टर पीपी नारायण जी है, शी विल बी heading and he will be taking her inputs in that committee, and Manocha ji है, तो he will be part of it, and in fact environment में अगर जैसे बैंकिंग में ऑफ कोर्स प्रवीण कुमार जी है और राजीव प्रधान जी, आप दो लोग हैं, तो अभी आई एम जस्ट टेकिंग द नेम्स ऑफ हेड जो लोग यहाँ पे हैं खाली। आशुतोष निगम जी, आप अगर एनवायरमेंट में जाना चाहेंगे बैंकिंग वाले कमेटी में, क्या लगता है? Where you can value add and contribute more. Banking only. तो आशुतोष निगम जी कल बैंकिंग कमेटी में हम रखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने बैंकिंग में प्रोग्राम किया है, क्या फाइनेंस पे बाकी के लोग तो रहेंगे उसमें, लेकिन जैसे हम बैंकर्स के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कोई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, तो हम चाहेंगे कम से कम 10 से 15 बैंकर आप लेके आए, राजीव जी लेके आए, प्रतिमा जी भी बैंकिंग में रहेंगी, तो उसमें फिर क्या होगा, हमें अगर 50 लोग ऐसे मिल रहे हैं जो उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं प्रोग्राम, और उसके बाद उसको हम आगे मॉनिटर करें कि एक्चुअली वो करने के बाद प्रोग्राम का आगे क्या उनकी लाइफ में चेंज आए। मेन पर्पस ये है कि इम्पैक्ट जो है वो इम्पैक्ट क्या आया, विजिबिलिटी, उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट हम कर सकें। कि आज बीएल गुप्ता जी ने भी शायद अभी ज्वाइन किया है, तो एक्चुअली आई एम देयर सर। हाँ जी सर। I am there for the last 15 minutes. अच्छा, okay. So anyways, I don't know how you get. I am extremely sorry. Some of my very close guests have come from Delhi, so I had the program to attend the meeting. I had confirmed to Preeti also, and but the moment I was free, I thought that I must join this. No, thank you for joining in. Although 5:30 we were to end, but we got a little late. So good that we could. I'm late. I do accept it. No, thank you for coming. So, while of course you will be certainly an important part of course banking is as a former GM of PNB, it will be important for your contribution as banking committee. So we will take that input also. So these committees we will start. So that will be good to have some programs which we can actually design and then deliver for from either Evoke India or from Arthi Vipra. So ये program करेंगे. So before we end, I think we have covered everyone. I would request BL Gupta ji also, while most of things he has missed, but if he has some certain points which he wants to cover, because I think आप शायद last meeting में भी नहीं आ पाए थे, जो होटल सार्विन में हुई थी. Problem है, and there are some problem with the treatment of my wife also. I feel I'm very sorry. नहीं sir, though I'm very much interested to attend the meeting, but sometimes that the treatment and the date of meeting collapse, so that happens. तो आपके कुछ inputs, आपके कोई विचार, और बाकी तो हम minutes आपको share करेंगे and on the group also separately. तो आप अभी सर वो जो ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, ग्रुप्स के बारे में सर बात कर रहे थे ना नीम साहब, तो वो ये बता रहे थे कि वुमेन्स के ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल से जो बैंकर्स है वो भी जानते हैं कि जो बैंक के द्वारा भी जो ग्रुप बनाए हैं उसमें जो वुमेन्स के ग्रुप है, दे आर फंक्शनिंग वेरी नाइसली, बिकॉज वो उनकी मिनट्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं, दे ऑर्गेनाइज देयर मीटिंग ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, और जो उनकी कंडीशंस है वो उसको फॉलो करते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने देखा जब आई वाज इन बैंक, जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट कंटिन्यूस इनकी मीटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जो अगर कोऑर्डिनेटर अच्छा होगा, वो पीरियडिकल मीटिंग करे, मेंबर्स को टाइम पे बुलाए, उनका पार्टिसिपेशन ठीक हो तो थोड़ा और अच्छा रह सकता है। राइट। थैंक यू। मीटिंग्स तो ऑनलाइन अरेंज की जा सकती है। यस, ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, तो डिफरेंट ग्रुप्स की, बैंकर्स की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की। इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे एसएचजी हैं, मीटिंग भी हो रही है, सेलिंग हो रही है, लेकिन सर्वाइवल रेट जो है लॉन्ग नहीं है, और सर्वाइवल वही ज्यादा है जो एसएचजी किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऐसे फॉर्मेशन इज नॉट डिफिकल्ट, गुड नंबर ऑफ ग्रुप्स कैन बी फॉर्म, बट द कंटिन्यूअस और सर्वाइवल उन्हीं का होता है जहाँ पे पीरियडिकल मीटिंग है, कोई मॉनिटरिंग प्रॉपर्ली हो रही है। सस्टेनेबिलिटी के प्रॉब्लम। यस, सो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो है, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट किया, अगर 3M वाला जो है माइक्रो प्लानिंग,
उस एसएचजी के उनको आपको प्लान बना के देना होगा। नहीं तो वही है, उनको ट्रेन करना होगा और फिर उसको मार्केट भी करना होगा, चाहे ओटीओ हो, इंश्योरेंस हो, किसी को प्रॉब्लम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। हम लोग पहले थोड़े बैग्स बनवाए थे, कपड़े के बैग बनवाए गए थे। राकेश त्रिपाठी हमारे यहाँ वो जो महिलाओं के साथ जो काम की, और वो बैग हम लोगों ने उनसे सेल भी करवाए कुछ सब्जी मंडी में जाकर के। मैं भी गया था। हमने आप द्विवेदी में मैंने खुद विजिट किया था, वो जो आपने जो लड़कियों का जो था सेंटर जहाँ पे काम कर रहे थे, सेंटर स्किल सेंटर में। हाँ, आप भी गए थे। तो हम लोग उसको वापस से इकोनॉमिक एक्टिविटी वो चालू कराएंगे, so that we can do that. Certainly we'll plan that. So anything else you want to say? Praveen, I want to say one thing. Haji. In all our discussion, we have forgotten to discuss the money making. I believe a couple of months back, I said I was sitting in your office and we discussed that Earth Vipra can have another vertical for consulting, MSME or corporates, or means corporate consulting for raising funds, turnarounds, and all those things. We have got lots of bankers, retired bankers as well, who can really participate in that, and we can do it for a fees. Correct. A proper fees as it's being charged. We are relying on consultants mostly from Bombay, who are much more ethical as compared to, I should not be saying that, but as compared to from Delhi or other places. So why not, you having worked at Bombay, right, and I having been a consultant there quite some time, why not have some money making also in the Avok group? So actually Shivani has these details of consultants who are in panel with Avok India. So what we will do, under Avok India consultants, we have consulting as a domain, and MSME में कई बार प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं। तो जैसे हमारे पास अभी सोलर में है, फूड प्रोसेसिंग में है, कुछ लोग जो कंसल्टेंट का एम्पैनल है, बट वी हैवंट स्टार्टेड मार्केटिंग देम वेरी वेल। अभी हम ग्रेजुअली उसको स्टार्ट कर रहे हैं। So what we will do, we will take the profile of all of you and put it on the our website also for consultant assignments. तो consulting assignment चाहे वो environment में हो या फिर किसी प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हो या बैंकिंग प्रोजेक्ट हो, अगर हमको इस तरह का कोई कंसल्टिंग असाइनमेंट if we can get it, so that is what we will use for, of course, on a fee basis, because we get it. Provided and how much fee can be shared with the person who's doing it. Naturally, it is actually that is how it will be done. So there has to be a term sheet signed for the consultant. It is project basis only, that as many projects what he can contribute. So that is what we will do. So we will design that whole thing. Although we already have that some of the consultants in panel which are there with us. But we will circulate the list with everybody and we will try and get some assignments there. Yeah, some sort of a group of consultants can be prepared, perhaps. Correct. Yes. And one success brings two more cases. Yes. Right. Yes, one more last, I think, point one, Rojani. रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, पर्सन देयर, यस, राइट। ट्रस्ट के बारे में कहीं कोई लिखा हो ट्रस्ट। हाँ, तो ये एक हमारा जो अगेन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल्दो मैंने बताया था जो टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग सर्विसेज हमारे पास डिपार्टमेंट है, उसमें हम लोग सारी सर्विसेज, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट फॉर्मेशन, एनजीओ फॉर्मेशन, अकाउंटिंग, योर एवरीथिंग वी आर डूइंग। सो उसमें ऑलरेडी हमारे पास, दिस इज अ न्यू डोमेन। पहले हम लोग किसी और के बाहर से कराते थे, अभी इन हाउस है हमारा। तो वी हैव 25+ क्लाइंट्स। तो वहां पर कहीं भी आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है किसी भी एमएसएमई को, whether it is for secretarial services, for accounting services. So as I said, we have an in-house chartered accountant, in-house company secretary, in-house accountants, and this team will be
doing two things. One is that developing new accountants, training on GST, other things, and also providing that services also to anyone. So individual की return filing करनी है वो करेंगे. MSME का उनका balance sheet, profit loss, उनका secretarial governance, compliance, anything. So there are multiple things which even they don't know. तो उसके कुछ presentation भी हम लोग अगर कोई आपको जो लगता है कि कहीं पर करा सकते हैं किसी कंपनी के लिए वो कराएंगे. For all these industry bodies जो है, ASSOCHAM हो गया, IIA है, CII है, and PhD Chamber of Commerce है. ये 4 bodies अभी जो लखनऊ में है उनके लिए हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं कि how important is compliance and governance, वो करके और वो what services we offer वो हम बताना चाहते हैं. So there also we would want कि अगर आप लोग उसमें भी हम लोग we will come back to you for these presentations also. So important points है. EDI को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि EDI में वहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं. हाँ. And they establish their own units. Yes. So we can charge for our services. Correct. Entrepreneurship development. Entrepreneurship development है. And their faculty. Correct. तो mostly मुझे जाना पड़ता है उनके यहाँ. Right. तो मतलब मुझसे कई लोग पूछते हैं सर कैसे करना होगा. तुमको तो मेरा अपना एक्सपीरियंस गए हैं मेरे कंसल्टेंट. उनके साथ ही हमारा टाई अप पहले था तो हमने भेजा था उसके बाद फॉलो अप नहीं हुआ तो बट ठीक है. हाँ बट कर लेंगे वो तो राइट. Correct. Correct. ठीक है सर. I think what we will do before we end the session, we can have a group photograph, virtual plus physical. तो अगर बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर ले, राजीव प्रधान जी शायद चले गए मुझे लगता है धीरे धीरे. I can't see him. So we will. Yes, yes. Correct, correct. So there are 2 more people in the meeting today who will be joining us. So Garima wants to introduce them. Yes. I would like to introduce 2 people who will be joining us very soon. One, both of you, can you please come on stage? You can just introduce yourself. Yes. Shivani Singh is Shivani Singh is joining as company secretary with us. For some reasons, Shivani is leaving us. So Shivani Saxena is leaving us. Shivani Saxena will be moving to a new role. Yes. Yeah. So we have Shivani Singh now at the company secretary profile. And Shivani replaces Shivani. Yes, yes. So Shivani Singh replaces Shivani Saxena. Shivani Saxena is moving to another organization. Shivani Singh? Shivani Singh आप हैं और Shivani Saxena भी आ जाओ अभी पता है. she is a current company secretary and she should be joining us. So in place of Shivani Saxena, who was company secretary with us, Shivani Singh is joining. And also we have Sarvesh Kumar Srivastava who will be heading the loan vertical for BFSI. So a small introduction for both of them. So Sarvesh Srivastava will be actually setting up the loan vertical, and of course BL Gupta ji और आप सभी लोग जो bankers हैं, आप सभी का support जरूर चाहिए होगा. So that always available. हाँ. So that for all the loan facilities under Arth Vipra, he will be setting up that. So we can maybe by next couple of months we can start those operations under the Arth Vipra Invest. So that is all I have to do. Thank you. Now, Dwivedi, I would like to add one thing. I'm sorry. Though I joined the meeting a little late, there's one very good scheme of Punjab National Bank, and I believe that a scheme would have been introduced in other banks also. It is called reverse mortgage. So, yes, that you have mentioned earlier also. नहीं, Avok के platform से some of the old age parents जिनके बच्चे abroad settled हैं and they cannot come frequently, तो उनके पास मकान है but they are not getting any money. So by way of this reverse mortgage, they can get some loan for their livelihood. Right. Every month, actually that loan that is given every month. So for their day-to-day expenses and all that, they are not required to depend on the money to be remitted by their children who are settled abroad. So this is not, the scheme is not very much popularized. Oh, for old age persons, this should be, I mean, we can make a awareness about this scheme in the old age group people, and some of them would be definitely interested to avail this facility. Right. Okay, thank you. Thank you, sir. So now we can have a group picture of all the members here. Idhar hi aa jate hain, so I think that will be without covering the people who are there.
Then we don't. नहीं इधर भी I don't आएंगे know. तो इनको cover थोड़ी हो सकती है। हाँ इधर आ जाएंगे, इधर इस तरफ आ जाते हैं, इधर आ जाइए, हाँ ये भी ठीक है। आई थिंक वहां पे भी आ रहे हैं, पर ये ठीक है, यहाँ आ जाएंगे, इधर ही आ जाएंगे। नहीं बट बाकी लोग उधर आ जाएंगे, so that this also doesn't cover. हाँ आए तो अभी मतलब फिर आ जाएंगे क्या टाइम अप टू अगर नीचे है तो मतलब आ जाएंगे तो बाद में एक मिनट जो आता है ये सृष्टि सक्सेस गुप्ता बाकी लोग कैमरा ऑन कर लिए गुप्ता जी आप भी इन लोगों को भी बुला नहीं आ जाएंगे क्या बाद में लेंगे उसमें पहले हम लोग कमेटी के लिए आ जाएंगे आइए आइए आ जाइए पिक्चर के लिए आप लोग भी आ जाओ सब लोग इधर ही आ जाओ आ जाओ कहीं तो इधर भी आ सकते हो कोई जो थोड़ा हाइट कम वाले इधर आ जाओ कम कम आ जाओ ठीक है चलो बस ठीक है ऊपर ऊपर खाली आ जाओ ओनली ऊपर ही आना चाहिए हाँ ठीक है ठीक है इधर कम दे दो दैट्स बेटर ठीक है आगे सब लोग अरे आ जाइए आप भी आ जाइए धवन साहब अरे अब तो मौके पे आए बिल्कुल आप बस सब आ रहे चलिए थैंक यू सर प्लीज हैव सम स्नैक्स आई थिंक आइए थैंक यू वेरी मच सभी को नहीं आपको नजर आ रहे हैं आप नाम तो आपका आ रहा है नहीं मैंने कहा था आई थिंक वी विल Bye. we cannot offer you tea coffee virtually so I am having it actually. Thank you very much. yes it is tea time तो आप लोग चाय और we will have it later next when we meet so thank you we are closing the session Okay, bye. thank you bye यही चल रहा है ना।